Hello everyone, welcome to my channel Ultimate Math Hubs. Today's lecture we will discuss about some questions from black book related to determinant and matrices. And the black book is written by Vikas Gupta sir and Pankaj sir. अभी तक आप लोग जान ही चुके होंगे मैं कौन हूँ और जेई से मेरा क्या वास्ता है। हालांकि मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, बट आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स in mathematics, and I solved the black book last 2 or 3 days. I realized this book is very important for JEE and JEE Advanced experience. If you are an experienced and solve this book, believe me, तुम फोड़ दोगे. So without waste of time, let's discuss some questions. Our first question. This is our first question. Pause the video and try it yourself. Okay. Now I try to solve these questions. In your exam, how you attempt these questions ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. उसके लिए आपको पहले नोटिस करना पड़ेगा. क्या नोटिस करना पड़ेगा? देखो इधर लिखा हुआ है कि Q इक्वल्स टू P ट्रांसपोज A P एंड हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है P Q 2014 P to the power T equals to which matrix? The options are given which matrix. So now first there is a power 2014, so we can't multiply Q P transpose. First multiply Q to Q square, then Q to Q cube, then Q to Q4. This is a long process, so we can't solve this way. In exam, how we solve? Just follow me. Write down the Q square. What is the Q square? P transpose AP. Then first P transpose AP. Now there is a matrix property, multiplication property. Multiplication of three matrices A, B, C are associative to each other. A, B, C. We write this way. So we use this property to solve this. P transpose A, P transpose AP. Now notice. Note the point that P transpose. What is this? 1, 2, 0, 1. What is the transpose? Transpose is row changes to column and column changes to row. So what is this? What is the P transpose? P transpose is 1, 0, 2, 1. Multiply both. 1. Oh, sorry guys, sorry. That's not. I made a mistake. P transpose, na? P transpose. What is the P? P is cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta, and multiply by its transpose, cos theta minus sin theta. Yeah, sin theta, cos theta. If we multiply, then what do you get? Cos theta, cos square theta, sin square theta, sin square theta. So this gives to 1. This one minus of sin theta cos theta, and this one sin theta cos theta. So this gives to 0. Similarly, this gives to 0. This gives to 1. This is nothing but identity matrix. So what we get? We get
Q square equals to P transpose A P. That means P transpose A square P. Got it? Okay. On the next page. So Q square equals to P transpose A square P. What is that? P transpose A square P. Okay. Now multiply both sides by what our aim? Our claim is to this one, no? Okay. P Q square. Sorry guys. P Q is sorry for disturbance. Q square equals to P transpose A square P. P Q square P transpose is nothing but P transpose A square P transpose, and this gives to P transpose A square P transpose. So this goes to identity, this goes to A square, this goes to identity. Since we know that multiplication of identity matrix with another matrix is give this matrix. So this is A square. So what we get? We get P times Q square P transpose equals to A square. So there is a relation that this is nothing but A square. So power of Q square Q is 2 equals to A square. Similarly, what the next step? Next step is Q3. Q3 is nothing but P transpose A square P times Q. What is the Q? Q is P transpose A P, and that gives, what is this? This gives P transpose A square P transpose AP. P transpose, this one is identity matrix, so we written AQ P dot dot dot. Similar way, Q to the power 2014 is equals to P transpose A to the power 2014 P. Okay, so P Q to the power 2014 P transpose is nothing but A to the power 2014. This is the fundamental of this question, funda of this question. Okay, now I multiply this term. What is the A? A is nothing but 1201. So what is A square? Multiply 1 2, first not 1201. Okay, 1201 1201 1 1 to 0 1 1 to 4 2 square 0, that gives to 1 0, that's 1. What is the A cube? A cube is A square times A times A square. What is this give? 1 2 square plus 2 2 square plus 2, that gives 0, that gives 1, that's mean 1 time 0 1 A4 A times A cube multiplied by 1201 1601 1 2 this gives to 1, this gives to 6, this gives to 8, this gives to 0 0, this gives to 1. So what are the relation? Here we write that A square is 2 square, A cube is
2 times 3. Okay, that is nothing but 1, 2 times 2, 0, 1. This is 1, 2 times 3, 0, 1. This is nothing but 1, 2 times 4, 0, 1. So what the pattern is 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4. That is what is the power is 4. This gives to 4. Power is 3. Then 2 times 3. So what is the pattern? Pattern is 2014 is nothing but 1, 2 times 2014, 0, 1. That is 1, 8, 2, 0, 4, 0, 1. 4028. This is our answer. 4028. Option number B is the true. Okay. In your exam, you solve this question within 2 or 3 minutes. Since I explained properly, that's why I take around 5 or 6 minutes. Nothing else. Okay. Now, this question. Try this question. Pause the video and try again. This question solves some few students. Few students. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ? हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम उसका इनवर्स निकालते हैं. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? लेट्स सपोज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a1 x cube plus this one is lambda a2 lambda square plus a3 lambda minus a4 equals to 0. This one is the characteristic equation of 3 by 3 matrix. Okay. Three by three matrix. So, and the Cayley-Hamilton theorem says that every square matrix satisfies its characteristic equation. So put here. So a1 a cube plus a2 a square plus a3a minus a4 what? A4 identity 0. Now if I say the given matrix is invertible. Matrix A is invertible. That implies determinant of A is not equals to 0 and A inverse exists now. Okay. So if a question asks, they ask to find the inverse, that means the inverse is exist. So now I multiplied both sides by A inverse. A1 A inverse A cube plus A2 A inverse A square plus A3 A inverse A equals to A4 A inverse identity. Since A1, A2, A3 are constant, so matrix multiplication it's not affected by A1, A2, A3. Okay, so A1 this gives to A square, A2 this gives to A3 this gives to identity, and this gives to A4 A inverse. So A inverse what? A inverse is A1 A square, A2 A plus A3 identity 1 upon A4 provided by A4 is not equals to 0. It's provided, otherwise not A inverse is not exist. Okay, so this way we find inverse of a matrix using characteristic equations. But in this question, say the inverse of A plus 2i, not inverse of A. How you solve? First write down the equation. A square plus 5a plus 5i equals to 0. Okay. So now our first work is
a square plus 5 times a plus 10 times I equals to 5i. Okay, a square plus 5 is common, a plus 2i equals to 5i. So let v equals to a plus 2i. Okay, so a plus 2i. So there is b, this one is b, but here is a and here is identity. So if we somehow replace a by b, then our job is done. So a plus 2i minus of 2i, this is the identity matrix. So subtraction, addition, it's the properties of matrix addition, so there is no harm. So 5b equals to 5 identity. There is a b minus 2i, that's whole square, plus 5b times 5i, that implies this gives b square minus 2b plus 4i plus 5b equals to 5i. Note, that is the note point is, we know that a plus b whole square equals to what? a plus b when the matrix addition is defined. Okay, this is the crucial point. So this gives a times a square, a times b, ab, then b times a plus b square. Here we not write in this form a square plus 2ab plus b square, because we don't know about the matrix commutativity property. A b equals to ba or not, we don't know about this, so that's why we can't write this way. But when b is replaced by identity matrix or multiple of identity matrix, then ai equals to ia, all we know ना, तो इधर हम वही किए. Okay, now what is this? V square plus 3b equals to identity. Now multiply by b inverse. Since question is asked that find the b inverse, that means b inverse is exist. Okay, b inverse, that's one b, that's one 3i, that's one b inverse. So what is the b inverse? So b inverse is nothing but b plus 3i. 1 minute. This one is 4. I made a mistake. This one is 4. There is no, this is only 3. Okay. So what is the b? b is a plus 2i plus what is I? That's mean a plus 2i whole inverse is nothing but a plus 3i. This is our answer. Check. This is our true option. Okay. So move ahead our next question. Okay, this is an interesting question. Let's try. First pause the video and write. Okay, then I will do. This question is very easy, believe me. Very easy. First we try. In this question, let's suppose A is P. Also, it's possible that A is Q, A is R, and some let's suppose B is P, only the P. B is match only the P, but A is match only the 3, or C is match only the 4. So we don't know how many possibilities are there. First try. Okay. First one.
क्वेश्चन में बोला है कि A is an idempotent matrix and I is an identity matrix of the same order. Then the value of n such that A plus I whole to the power n equals to I plus 1 to 7a. Yes? क्या ही है इसमें, मजा आएगा बहुत इस क्वेश्चन में भाई. इज आइडेम्पोटेंट. Idempotent matrix. So, what is the meaning of idempotent matrix? First of all, matrix should be what? Square matrix. So, a let's suppose then. So, a square equals to a. If this happens, then we call the matrix is idempotent matrix. And since a plus I whole to the power, let's suppose the order is n, because the question is given that a plus I whole to the power n, and we find the values of n. So that's why we change the order of n. For defining a plus I, how we add two matrices? When the order are same, then we add two matrices. Na? That's why say the order of I also m cross n. Okay, understood ना? तो ये कह रहा है कि ये होगा what is it? I plus 1 to 7. Identity matrix plus 1 to 7. A matrix. Then the n. What is the value of n? Again use the same property. This one. This one. This one. And when now B changes to identity, then addition matrix multiplication is commutative. So use this property. So and we use another identity. What is this? A plus B whole to the power n. What is this? This formula is from binomial. So if anyone don't know about this formula, so please Google it and you can see. Otherwise, in further classes we discuss about this formula. Okay. So this gives a to the power n plus nc1. What is this nc1? This is what is the C? Combination a to the power n minus 1b plus nc2 a to the power n minus 2b square. मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये प्रॉपर्टीज पता है. ओके, so the last one is n minus 1 a b to the power n minus 1 plus b to the power n. Now we replace a by a and b by I. So what happened? Nothing but a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 b is identity, nc2 a to the power n minus 2 b is again identity, identity square is identity, so 1 ncn minus 1 e to the power, this one is a, this one is again identity, plus this one is identity. Okay, now here is another property. Given a square equals to a, that's mean what is the value of a cube? A cube is a times a, that's mean a square, that's mean a, that implies a 4 is also a, and so on. A to the power n is also n. Okay, and the n greater equals to 2. n greater equals to 2 सबके लिए a to the power n equals to identity होना पड़ेगा, क्योंकि
हमें गिवन है कि a टू दी पावर 2 इज a. Also we use a plus b whole to the power n formula in this previous lecture. Just put down. Okay, first replace कर दो इसको, a plus identity whole to the power n, इसको replace कर दो. a to the power n is replaced by a to the power n minus 1 is also replaced by a. सब पावर को रिप्लेस कर लो. a plus nc1, here is a nc2a plus dot ncn minus 1a plus identity. Okay, yes. Identity plus nc1 identity plus nc2 identity. No, sorry. A is common, so A is a matrix and other ones 1 plus nc1, nc2, ncn minus 1, all are scalar. So a matrix multiplied by its scalar, it's defined. Okay, no harm. There is identity. And now you use this inequality. So this one is known, no? Put the value a equals to 1 and b equals to 1. What you get? 2 to the power n equals to 1 plus nc1 plus nc2 plus dot ncn minus 1 plus 1. You get this, na? So the value of this is 2 to the power n. Now if we value of this, then this gives to minus 1 plus. Okay, just we use this formula. So this one is nothing but 2 to the power n minus 1 a plus identity. In our question they say this is nothing but identity plus 1 to 7 a. So 1 to 7 equals to what? 2 to the power n minus 1. That means 2 to the power n equals to 1 to 7 plus 1 to 8. 1 to 8, na? Now factorize 1 to 8. 2 4 8 64. So 2 cube times 2 cube times 2 6 2 to the power 7. That means 2 to the power 7. Then what is the value of? That implies n equals to what? 7. So n equals to 7. So this gives a moves to r. All set. In the second question, now second question में क्या बोला है? बोला है कि I minus a whole to the inverse equals to I plus a square plus dot a to the power 7. Then a to the power n equals to 0. Where n is? कब a to the power n का वैल्यू 0 होगा? a to the power 8 का वैल्यू 0 होगा, a to the power 9, a to the power 7, a to the power 10. किसका वैल्यू 0 होगा? तो हमें फाइंड करना है I minus a. चलो b में चलते. I minus a inverse equals to I plus a square plus a cube plus dot what? 7 ना? S7. Then इधर क्या है? इनवर्स लिखा हुआ है, तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है. सो दिस साइड इज मैट्रिक्स, दिस साइड आल्सो मैट्रिक्स. तो हम बोथ साइड राइट साइड को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वही करो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई. किससे मल्टीप्लाई करूंगा?
आई माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इनवर्स टाइम दिस मैट्रिक्स इज गोस टू आइडेंटिटी गिव्स आइडेंटिटी. ओके, now the question is very easy. You all are. पैटर्न ढूंढ पा रहे हो? क्या है पैटर्न? किसी को दिखाई दे रहा है? पैटर्न क्या है? मेरे को तो दिख रहा है भाई. देखो, आइडेंटिटी टाइम्स आइडेंटिटी इज गोस टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी टाइम्स मैट्रिक्स इज गोस टू मैट्रिक्स. प्लस ब्रैकेट इट a minus a square bracket it a square minus a cube bracket it plus dot dot e to the power 7 minus a to the power 8 bracket it. Notice, पॉइंट करो कि देखो मैट्रिक्स एडिशन आर associative commutative. Because of associativity we cancel out this one because this gets to null matrix. This one, similarly this one goes to this one and a7 cancel out this 7. So here the left one is a minus a to the power 8. Okay, that implies n equals to 8. A to the power a to the power 8 के लिए 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है. So b goes to s. There is any possible value of n for which a to the power n equals to 0? Anyone? No ना. देखो a to the power 8 अगर 0 हो जाए तो अगर बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दो तो a to the power 9 again goes to 0, a to the power 10 again goes to 0. So this one s में जाएगा, q में जाएगा, t में जाएगा. So अगर किसी ने b को s में भेजा थी तो उसका आंसर गलत है, क्योंकि अदर्स ऑप्शन भी आपको चेक करना होगा. Because this question is from JEE Advanced. JEE Advanced Pro and from the black book. So every options you should need to check. Okay. Now move at the third questions. What is it? क्वेश्चन में बोल रहा है कि A is a matrix such that A I J equals to I plus J I minus J. Then A is a singular if order of matrix is what? मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं ना, ए ई आई जे, ऐसे तो लिखते हैं. एम बाई एम. हाँ ठीक, लिख. ओ यार क्वेश्चन सब पे क्वेश्चन शुरू होने पहले ही भाई पेज खत्म हो गया यार. मेरे को पेज ऐड करना पड़ेगा. ऐड कर लिया. देखो बोला है कि ए, हम कैसे लिखते हैं इसको, ए आई जे एम बाई एन ना, एंड दिस वन इज ये वन लेट्स सपोज ए इज 3/3. मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन नहीं है तो मतलब क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उस केस ट्रू होना पड़ेगा. सो आवर assumption is A is 3/3. So this one is matrix and given that Aij is
I plus j and what? भाई क्वेश्चंस लोड होने में इतना टाइम लग रहा है। आई मैनेजर तो फाइंड कर लो, कर लो फाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 करने से क्या होता है, 1 1 करने से 0 आ जाएगा, 1 2 करने से 3 आ जाएगा, 3 3 3 3 3 -3, 1 3 करने से 4 4 -8 4 माइनस, ठीक है। 2 1 करने से क्या हो जाएगा, 3, ओके 0, दिस वन। ये 2 3 करने से क्या हो जाएगा, 5 2 3 -5। ये क्या आ जाएगा, anyone guess, any options, 3 4 3 -1 2 8, this one is goes to -5, this is 0। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये इज, इसको क्या, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बॉस, इसका डिटरमिनेंट तो हमेशा 0 ही होगा ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए इज दिस, देन ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज। तो ये 3/3 करने से हमें 0 मिल गया, आई मीन इसका डिटरमिनेंट, ये सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन डिटरमिनेंट 0 मिल गया, 0 3/3 करने से। तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, ये 0 मिल गया, वो इन n इक्वल्स टू 3, ठीक। हमें पता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, दैट इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n मॉड ऑफ n। और ये ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए के बराबर होता है, तो ए बराबर हो गया इक्वल टू -1 होल टू द पावर n। तो अब तुम ये बताओ हमें, जब n इक्वल टू ऑड होगा तो क्या होगा, n इक्वल टू ऑड होगा तो क्या होगा, 0 होगा ना। अगर n इक्वल टू इवन होगा देन क्या होगा, देन हम कुछ कह नहीं सकते, n इक्वल टू इवन हम कुछ नहीं कह सकते, 0 और may not okay। So our case the matrix is given and this is this, so we get a is the antisymmetric matrix, symmetric matrix, and since we get symmetric matrix and or determinant of the symmetric matrix is 0 when the order is odd, so our options is 3 7 9, okay। So this goes to n equals to when 3 तो है नहीं, है 7 है 9 है, ओके। तो आर एस में भेज दो, आर कॉमा एस, तो n का वैल्यू कभी 7 होना पड़ेगा, कभी 9 होना पड़ेगा, तब वह 0 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट एवरीवन। नाउ आवर लास्ट ऑप्शन डी, if a non-singular matrix A is symmetric, if a non-singular matrix, non-singular, that means A is not equal to 0 and A is symmetric, A is symmetric such that A inverse is also symmetric, then order of A। हाँ तो A inverse whole to the power transpose क्या होता है, क्या होता है, माइनस होल टू द पावर such that A inverse is also symmetric non-singular matrix, then order of A can be माइनस, चलो उधर ही जाते हैं, डी ऑप्शन नॉन जीरो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कह रहा है कि
ए का ऑर्डर क्या होगा जिसके लिए ए इनवर्स का ए इनवर्स ऑल्सो ए इनवर्स ट्रांसपोज इज ए इनवर्स हो जाए ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाए देखो हमें ये प्रॉपर्टी तो पता ही होता है ना कि ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज क्या है ए इनवर्स है फॉर ऑल एन के लिए होता है मैट्रिक्स में कुछ भी ऑर्डर हो जाए सबके लिए ये ट्रू है सो एन इक्वल्स टू 7 8 9 10 सबके लिए ट्रू है ये प्रॉपर्टीज है भाई प्रॉपर्टी ये तो ये किस में जाएगा पी में जाएगा क्यू में जाएगा आर में जाएगा एस में जाएगा दैट्स इट so if I erase the another term not working so ठीक है कोई ना रहने देते हैं आरएस ओके चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस what I can draw I can't erase it sorry यार some glitch so solve this question and tell me the answer in my comment box what is it I swear many of you are not able to do that क्या है क्या a is given है तुम्हारे पास x 3 2 1 y 4 2 2 z हो गया ठीक है अभी बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो एजीजे ऑफ ए इसको फाइंड करने के लिए कह रहा है तो हमें तो पता है ना इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है ये ऑलवेज एडजॉइंट ऑफ ए टाइम इसका बराबर होता है यार 3 by 3 मैट्रिक्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट सो अब सब लोगों को ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है very important okay so to need to find these that's equals to that so our main target is to find determinant of it okay find the determinant of it find it x y z minus 8 minus 3 z minus 8 plus 2 2 minus 2y okay so write down x y z minus माइनस को कॉमन ले लो 8x प्लस 3z 4y प्लस 4 प्लस 24 कुछ दिख रहा है कुछ दिख रहा है ना क्या दिख रहा है कि इसका वैल्यू तो हमें पता है ना इसका वैल्यू पता है क्या है इसका वैल्यू एक्स वाई जेड 2 लैम्डा माइनस इसका वैल्यू क्या है लैम्डा प्लस 28 और ये क्या है 28 दैट्स इम्प्लाइज 2 लैम्डा माइनस लैम्डा दैट्स इम्प्लाइज लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज क्या लैम्डा so what is this is lambda times I3 and this goes to lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda this question is solved by less than 1 minute तो थोड़ा सोचो हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए तो हम तो ये नहीं करेंगे ना इधर एक्स वाई जेड है हमें उसका वैल्यू पता नहीं है इधर रिलेशन भी गिवन है तो हम क्या एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए उसका कोफैक्टर का आई मीन कोफैक्टर निकालो देन एडजॉइंट बनाओ वो भी 3 क्रॉस 3 आएगा उसके साथ एक को मल्टीप्लाई करो दिस इज वेरी लेंथी
when you notice that x, y, z are variables, I don't know the values, and this one, so फर्स्ट क्लिक करना चाहिए इस प्रॉपर्टी, तभी करेगा जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So last question. चलो, this is on the last question of our today's lectures. Last question. इसको लगाते हैं. क्या बोला है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है ये 3x3 मैट्रिक्स एंड बोला है कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो. ठीक है, पहले मैट्रिक्स को बना लो, देन उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे हम. ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3. This is the matrix. And the given that Aij equals to nothing but 2 cos t when I equals to j, 1 when I minus j is 1 and 0 when otherwise. So ठीक है, तो a को बना लो अभी हम. ये 1 1 distance is, I mean both are I equals to j, so 2 cos t. 1 2 distance of I mean difference of I and j is 1, that means this gives to 1. 1 3 distance is 2, difference is 2, so there is no cases, there is a third case, this is other case, so we put it 0. 2 1 distance is 1 1, 2 2 this is 2 cos 2, 2 cos t, and third one is 2 3 distance is 1, this is 1. 3 1 distance is 2, so 0. E 3 2 distance is 1, this is 1. A 3 3 this is the same, so 2 cos t. आप लोगों, अब सभी लोगों को क्या समझ आया है कैसे हम मैट्रिक्स को बनाएं? अभी क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल. भाई ये तो बहुत ही आसान हो गया. अभी 2 cos t दिख रहा है, 2 cos t हो गया, 4 cos स्क्वायर t आ गया, -1 भी हो गया, 1 के लिए इधर माइनस होता है, 2 cos t. अभी देखो मैट्रिक्स था, अभी डिटर्मिनेंट किस में चला गया? ट्रिगोनोमेट्री में चला गया. अब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. इसका मतलब क्या? अभी जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कॉस से रिलेटेड को जाएगा, देन उसके कॉस टी कैसे उधर मैक्सिमम फाइंड करता है उस प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा. और मैं मान के चलता हूँ कि आप सब लोगों को वो पता है. अगर नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लो या बुक्स वगैरह में देख लो, और नहीं तो अगले जो वीडियो आने वाला है उसमें हम बारे में चर्चा करेंगे. ओके, तो डोंट वरी. तो क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा 8 cos क्यूब t. What I do? 8 cos cube t minus 2 cos t, 4 cos t, 4 cos t कॉमन ले जाओ, 2 cos स्क्वायर t minus 1. अब देखो ये देखो cos स्क्वायर t ये कहां से कहां लाई करता है? 1 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1. अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos स्क्वायर t 2 आ जाएगा. ओके, अभी क्या करो, -1 सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस आर द ऑल आर द रियल इनइक्वालिटीज वी कैन डू ना. So -1 to cos square t less equal to 1. So what is the maximum value? This one the maximum is 1, and -1 less equals to cos of t less equals to 1. Cos t का maximum value क्या होता है? -4 less equals to 4 cos t. 4. तो 4 cos t का maximum value का क्या है? 4 है. इसका maximum value क्या है? 1 है.
तो जब मैक्सिमम मैक्सिमम मैच करेगा तभी ना मैक्सिमम होएगा। तो इसके लिए 4, इसके लिए 1, so max of determinant of A is nothing but 4 times 1 equals to 4. This is our answer. So if you have any doubt, any questions, any topic related, you can ask to me through my Telegram channel or Instagram channel. Take a picture and send to me. Thank you guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.